देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट। आजकल लोग यूट्यूब पे भी पैसा कमाते हैं और अच्छा कमाते हैं। वो कीजिए जिससे आपको खुशी होती है, पैसा साथ में आ जाएगा। नेवर चेज मनी, स्मॉल विंस, सेलिब्रेट, बी अराउंड टू योर पीपल, एंड आई थिंक एम्पैथी इज द की। सो यू नीड टू बी एम्पैथेटिक. People are genuine. You have to offer the ear to listen to the problems, and everything has a solutions. So hello, namaste and Jai Hind. Welcome to yet another episode of Success Habits in conversation with me, life coach Samir Ajmani. ऐसे लोगों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी मैं आप तक पहुंचाता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अभ्यास से जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है और आज दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं. I am extremely happy to introduce our guest today, an extremely lively and very energetic Miss Sheetal Bhardwaj. Welcome, Sheetal. Thank you, Samir. Thank you so much for inviting me in. शीतल, आपसे बात करके आज बहुत मजा आने वाला है. That तो I am very clear. Miss Sheetal Bhardwaj is a seasoned risk and compliance professional with over 2 decades of hands-on experience managing successful compliance programs in the MENAT, that is the Middle East, North Africa and Turkey and the Australasia regions. She is an approved compliance officer and MLRO by the Central Bank of the UAE and Dubai Financial Services Authority. As a subject matter expert, she has served in leadership roles covering various aspects of regulatory compliance and financial crime risk, including regulatory audits and thematic reviews. She is an executive board member and the communications director of the Association of Certified Financial Crime Specialists in the MENA chapter. She is an MBA in finance and a mathematical science graduate in statistics from the Delhi University. She is a certified anti-money laundering specialist, a certified global sanctions specialist, a certified fraud examiner, a certified cryptocurrency investigator, a certified compliance officer along with other certifications from Manchester Business School and Henley Business School. Sheetal is also a well-known speaker and has delivered several speaking and training assignments in various forums, including at the University of Bradford and the University of Dubai. Her hobbies include gardening, cooking and traveling. So let's speak to her and learn from her life. शीतल, मेरा सबसे पहला सवाल, how do you maintain such high energy levels in both your personal and professional life? Samir, I sleep very less because I believe that the daytime is a time when you can do a lot of things, and I think the energy levels is because I believe that your life is very limited and you have lot to achieve, lot to acquire, lot to tick off. So I think that's where I get my energy from कि बहुत कुछ करना है, time बहुत कम है. So personally, professionally, हर चीज को acquire करना चाहती हूँ. बहुत as I always say, I'm very hungry. I'm very hungry, and that's what my motivation and the ambition is. So I think that's something which I get. Maybe the genes. I have lot of energy because I think that's how my parents have also, they have been like that. But it's also the personal traits. बहुत कुछ acquire करना था life में, शायद कुछ था नहीं और बहुत कुछ ambitions थे. तो I think from there, the hunger has come from there. As we say, you need to have a fire in your belly. So hunger to achieve more, learn more and live more. Absolutely. Wonderful. Walk us through your career journey and the key milestones that led to your current position. Sure. So the career journey, मैंने एक बार कभी शाहरुख खान का इंटरव्यू सुना था. उसने कहा था कि मैंने कभी कुछ प्लान करके नहीं किया, बस मैं काम करता रहा. I think मेरे को भी ऐसा लगता है कि sometimes you plan life, sometimes life have a plan for you. So I think this is not how I actually kind of thought my life is going to be. I was doing statistics rather than I was a triple science student. Statistics happened. I was good into mathematics. Then I met my then boyfriend, now husband. He was into management. He was a banker. I got influenced by him. So MBA कर लिया finance में. वहाँ से HSBC आया and वहाँ पे मेरी समीर से भी मुलाकात हुई. बोलने की हिम्मत नहीं होती थी. I was just a fresh graduate from the college. समीर को हमेशा से देखा, admire किया. पर आई थिंक वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई
and then moved on because my husband was in Dubai, and then started carving a life for myself in Dubai. चलता रहा नॉन स्टॉप चीजें आती गई. I was very fortunate. So I think life is about a mix of both opportunity and the I'll say the luck. So it's a right place, right time. मेरे साथ चीजें चली हैं. I will not say struggle नहीं था, पर अगर नीयत अच्छी हो और आप हिम्मत रखें और काम करते रहें तो चीजें fall in place होगी. So I think 21 years non-stop, I did good work. When I reflect back, I feel extreme pride of my journey, what I have covered so far. So nice to hear that. शीतल, अपनी करंट प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के बारे में बताओ. रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस. समीर, जब हम लोग इस चीज को करते थे ना, सो उस समय ये कंप्लायंस समथिंग कॉल इज गुड टू हैव फंक्शन होता था. ये कहीं आपको लीगल में घुसा देते थे, कभी इंटरनल कंट्रोल में घुसा देते थे. अभी हम बहुत कुछ सुन रहे हैं कि जितने भी आपके सेंट्रल बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक हैं, सेबी हो गया, सब लोग एक दूसरे को फाइन कर रहे हैं. एक फैटअप होता है हमारे फील्ड में विच इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि कंट्री का रिस्क रेटिंग करता है. Okay. तो जैसे अभी यूएई है, उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है. उसके 40 रिकमेंडेशंस होते हैं. उसमें वो कंट्रीज के सिस्टम्स एंड कंट्रोल चेक करते हैं कि आपका प्रोटोकॉल कैसा है, आपके आपके पॉलिसीज कैसी हैं, आपका गवर्नेंस कैसा है. सो अभी इन चीज़ों की स्पेशलाइजेशन आ गई है. सो जब मैंने कंप्लायंस करना शुरू किया था, आई वॉज लाइक वन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ऑफिसर और रिस्क एंड कंप्लायंस ऑफिसर. नाउ रिस्क ऑफिसर अलग हो चुका है, कंप्लायंस ऑफिसर अलग हो गया. Okay. तो मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो ये मर्ज फंक्शन होता था. अभी स्पेशलिस्ट फंक्शन हो गया. अभी आपके पास और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आने शुरू हो गए हैं. तो मैं जो करती हूँ, मैंने रेगुलेटरी रिलेशनशिप्स मैनेज किए हैं विद डिफरेंट रेगुलेटर्स, जिसमें आपके पास उनकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं. कुछ नए प्रोडक्ट्स आप अप्रूव करवाते हैं. कई बार बैंक एक्स्ट्रा कुछ करना चाहता है, उसके लाइसेंसेस दिलवाते हैं. प्लस जैसे आपके वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, हवाला ऑपरेटर्स होते हैं, या कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है. सो वो सब हमारी टीम करती है. सो ये मेरा प्रोफेशन है, वेर इन वी डिटेक्ट ऑल द ब्लैक मनी और द मनी विच इज नॉट अ लेजिटिमेट मनी, एंड दैट इज समथिंग व्हाट वी डू. वी सी कि पैसा किसी सैंक्शन कंट्री में नहीं जा रहा है. So all such is something what my expertise is. और very recently मैंने virtual asset digital asset space, जो कि आप आजकल सुन रहे हैं buzzword है crypto currencies, उस space में भी काम करना शुरू कर दिया है. So this is something what I do, ensuring that there is nothing which is a black money coming into the system, and we are the actors who are actually fighting all the bad actors who exist in this economy right now. Interesting. I'm sure, Sheetal, your current profile comes in with a lot of pressure. How do you handle the pressure or even the resistance, especially from the senior management regarding maybe certain compliance measures? Samir, you have been a banker yourselves, and you know that business is very restless, and we all are here to thrive. And compliance or compliance officers, हम लोग बिजनेस जनरेटिंग फंक्शंस नहीं है, हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स नहीं है. तो वी आर ऑलवेज लाइक सपोर्ट फंक्शंस. सो मेरा जो प्रॉब्लम आता है या जो मेरे चैलेंजेस हैं मेरे रोल में, 2 challenges which I see. फर्स्ट थिंग, मेरा रोल एक पर्सनल लायबिलिटी रोल है. अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फाइन लगता है तो आप देखते होंगे इंडिविजुअल्स को भी पेनल्टीज लगती हैं या उनके लाइसेंसेस रिवोक हो जाते हैं. एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मेरे बिजनेस का प्रेशर क्या है. So I treat myself as a trusted advisor, and that's how my business look up to me. So I will tell them that how do they do their business, what are the risks involved. I cannot eliminate the risk, I can mitigate. मैं उनको बता सकती हूँ क्योंकि the risk lies with the business. So हमारा काम ये है, वो हमारे पास आते हैं किसी भी नई एप्लीकेशन के साथ, नए प्रोजेक्ट्स के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ, तो हम उनके रिस्क बताते हैं उनको और हम उनके साथ काम करते हैं. तो आई थिंक ये मेरा एक कहना है. इसीलिए आपको एक स्टैंड अलोन कंप्लायंस ऑफिसर बनाया जाता है, दैट यू आर नॉट अ चेक बॉक्स, यू आर नॉट अ शो स्टॉपर, यू हैव टू वर्क अलोंग साइड विद द बिजनेस, एंड दैट्स द रीजन आई एम पॉसिबली वन ऑफ द वेल लाइक्ड कंप्लायंस ऑफिसर. पीपल फील कंफर्टेबल कमिंग टू यू. उनके पास ये नहीं होना चाहिए कि इनके पास जाओगे तो ये स्ट्रेट अवे नो कर देंगे. एग्जैक्टली, कि रूल बुक पढ़ते ही मना कर देंगे, बिकॉज रूल बुक इज नॉट द गाइडेंस प्रिंसिपल. तो आपको साथ में फॉर्मुलेट करनी है स्ट्रैटेजी. यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द रेगुलेटर, यू कैन ऑलवेज चैलेंज, एंड दैट्स वेयर यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, दैट यू आर लाइक्ड बाय द बिजनेस, एट द सेम टाइम यू आर स्टॉपिंग एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग टू डू. एंड एनी बिजनेस, एनी एंटिटी, whether financial or non-financial, reputational risk is the biggest risk. And Absolutely. Google never forgets. So we don't want to be in the archive, and I think that's where the beauty comes in, that you have to strike a balance. Balance, absolutely. Balance is the key. Absolutely. In your opinion, Sheetal, what are the most critical leadership qualities
necessary for a professional to excel? I think the leadership quality, first thing first, is the correct articulation. Communication is the key. I think अगर आपने अपना मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दिया अपनी टीम को, वो इट्स अ हाफ विन बैटल काइंड ऑफ अ थिंग. मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक देखा is a communication which doesn't come. And as a leader, people look up to you. So the leadership is about critical thinking about one goal and how to achieve that goal, taking everybody together. But at the same time, people look up to you. So you have to be the people leader, Absolutely. lead by an example. And that's something which I've learned. That's something which I expect from my leaders, to motivate me, to coach me, to give me a career plan. And that's something what my juniors look up to me. So I think this is something very important. क्योंकि market इतनी competitive है, hiring is equally an important process, but at the same time retaining that staff is equally Extremely important. important, Absolutely. तो मैं बंदे को hire करती हूँ, and my staff just leave after learning after 6 months, 8 months, 10 months with a small hike of the salary. It's a very big loss to me. So I think retaining that staff वो तभी होगा जब मैं उसको enough I'm supporting them, I'm there around, I'm giving them training and development and a career development plan. So I think all this I see it, plus a professional growth as a leader, what I can offer to my... It needs to be shown to the... Absolutely. Small wins, celebrate, be around to your people. And I think empathy is the key. So you need to be empathetic. People are genuine. You have to, offer the ear to listen to the problems, and everything has a solutions. Failures or setbacks को कैसे handle करते हो? And what lessons have you learned from such experiences? Samir, when I was much younger, it was difficult. Because, not difficult, I think it's my personality. I can't handle no. And that was something with me when I was much younger. It is still with me. But as I'm growing old, मुझे लगता है कि मुझे उसको absorb करने की capacity ज़्यादा हो गई है. शुरू में I will not say I'm a human at the end of the day. I used to cry a lot. I used to go to my mom. I used to broke down that, mom, it's just not happening. I used to get very restless. And it's very human. I mean, आप रो लीजिए, better है, then you will bounce back. And life is a sine curve, and that's something I can tell you after, being into the industry for a long time. Nothing remains forever. Today there is somebody, tomorrow there will be somebody else. So never let your success just rule your head. तो आप अगर वहाँ हैं तो कल आप नीचे भी जाएंगे, और कल नीचे हैं तो आप ऊपर भी आएंगे. So I think I'm learning it with my experience कि it's all good. I mean, you just stay calm, and I don't think difficult time last. And it's tough people who actually last longer. So you have to take the situation headstrong, and time shall pass by. So what you're saying, the idea is to keep moving. Absolutely. Persistency, be optimistic. It's very human. रोना, कभी break down करना कोई गलत चीज नहीं है. If you are hurt because of some situation, better be vocal about it. दिल में ना रखें, उस चीज को बोलें, express करें. It makes you feel better. Very nicely said, yeah. Sheetal, you're a mother to 3 children now. एक healthy work-life balance कैसे maintain करते हो? Obviously, between the demanding professional responsibilities and also the responsibilities at home. Samir, I'll be very honest. I'm not somebody who will just bake the cookie and take all the credit. हमेशा से बोला जाता है, behind every successful person, I'm not talking about the gender, there is a family, strong family support. So if I'm able to fly high, I have a very supportive family, whether it's my parents, my mom and dad, my husband. So it comes as a teamwork. Yes, I'm a mom of 2 and I have a toddler in my home now. So I was able to achieve anything or everything because of the supporting hands which came forward, which never let me fall down, which were always there to pick me up. So I would not say कि सब मैंने किया, हाँ मैंने किया, पर बहुत लोगों ने मुझे उसमें support किया. साथ दिया. Absolutely. So I'm very blessed to have a very, very supportive family who understand that my work is my mojo. I'm very passionate about it. Yeah. लेकिन अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ये सब नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैं नहीं थी, मेरी माँ थी मेरे बच्चों के पास, या मेरी मदर इन लॉ थी मेरे बच्चों के पास, तो सब लोगों ने पिच इन किया उस चीज को. So family is of utmost importance. Absolutely. And we should always be grateful. You cannot say कि आपने मेरे लिए क्या किया. उन्होंने जो किया, आपको उस चीज को count करना चाहिए. So count your blessings, please. Wonderful. Sheetal, with your kind of enthusiasm, I'm sure it can lead to taking risks and also embracing challenges. Can you share an experience where you took a bold step and what you learned from it? So Samir,
I am a story of a lot of risk which I've taken. So I think me and my husband, we both are working and we balance each other. So my husband is an absolute opposite personality of mine, who is very stable, very calm, a soft-spoken person. I am little restless. I am much of a risk taker. So मैंने लाइफ में बहुत रिस्क लिया है. Even moving from Delhi, I had a well-paid job here as well. When I moved to Dubai, almost with nothing in hand, I had my own pitfalls. But the biggest risk which I can think of, which I've taken now, is at the peak of the COVID. 22nd March 2020, I decided to board the flight to Auckland because I didn't want to let it go. Prior to that also मुझे सिंगापुर जाने का, लंदन जाने का बहुत मौका मिला. ये एक चीज़ थी जो मैं करना चाहती थी. And my family was very supportive. But nobody knew what COVID is all about. Quarantine मैंने सिर्फ कुत्तों के लिए सुना था. So मुझे पता नहीं था what I'm signing up for. I was living in Dubai और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ जाना था, लेकिन सारी फ्लाइट सस्पेंड होना शुरू हो चुकी थी. एंड दैट्स व्हेन ही सेड कि शीतल, दोनों का जाना सही नहीं है, आप जाओ, मैं थोड़े दिनों बाद आता हूँ. और जब मैंने वो कॉल लिया तो मैं दुबई के इमिग्रेशन काउंटर पे थी. I with a non UAE पासपोर्ट. जब मैं वहाँ खड़ी थी, सब कंट्रीज ने सिर्फ अपने नेशनल्स बुलाने शुरू किए थे. तो मुझे इमिग्रेशन पे ऑफिसर ने बोला कि शीतल, आपको पता है आप अगर यहाँ से बाहर निकले तो अंदर नहीं आ पाएंगे. मैं 2 मिनट के लिए खड़ी रही. मुझे लगा सही कर रही हूँ. आई हैड माई जिटर्स बिकॉज तब तक मुझे मास्क पहनना भी समझ नहीं आ रहा था कि N95 मास्क कैसे पहनेंगे. लोगों को मैंने एयरपोर्ट पे लेटे हुए देखा. यू डोंट नो द सिवियरिटी ऑफ इट. बट then I said, no, I will just finish what I've started. And I took a step forward. मैंने कहा, आप stamp कीजिए, मैं जा रही हूँ. And that apparently happened to be the last flight which flew off from Dubai to Auckland. और उसके बाद 5-6 महीने तक कोई flight नहीं थी. So that journey of 3 years when I lived alone in New Zealand, I had 2-3 things which was keeping me motivating. First thing, I don't want to see myself as a failure. कि अगर मैंने इसको फेल किया तो मैं अपने आप को फेस नहीं कर सकती. सेकेंड थिंग, आई स्टार्टेड दैट फॉर माई चिल्ड्रन. सो मुझे पता था कि दे लुक अप टू मी. सो वेन एवर यू फील लाइक क्विटिंग, ऑलवेज सी द पीपल हु आर लुकिंग अप टू यू. सो देयर वर कपल ऑफ थिंग्स दैट दैट kept me going. And I think that was the biggest risk. I didn't know कि कोविड खत्म होगा, मैं वापस आऊंगी नहीं आऊंगी. बस एक चीज बोलती थी कि सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते. आप इस सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन से डील कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है. अब मैं रो के डील करूं कि मैं खुश रह के डील करूं, वो मेरी चॉइस थी. सो आई स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ लोकल फ्रेंड्स. आई स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर लॉन्ग वॉक्स. मेरी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो गई. मेरा डायबिटीज ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया उस सिचुएशन में. स्किन बेटर हो गई. सो आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ वर्कआउट्स. So I think I took out options, opportunities out of the situation I was into. I did a lot of certification during that time. So मैंने अपने आप को पढ़ाई में डाल दिया, जॉब में डाल दिया, वर्कआउट्स में डाल दिया. तो बिजी रही हूँ उन चीज़ों में. And then when I came back, I had my New Zealand indefinite PR approved. I had my job in hand. Everything fall in place. It's just like your persistence, your determination, and your attitude towards your life. That helps. Just that step forward absolutely can open up a whole new world. Absolutely. अगर मैंने वो नहीं किया होता समीर, मैं जॉब छोड़ चुकी थी अपनी दुबई की. मैं वापस आती ना, तो मेरे पास इमिग्रेशन होता. दुबई की जॉब छोड़ चुकी थी. कोविड में किसी को नौकरी मिल नहीं रही थी. I was a sheer failure. I'm not saying वो भी फेलियर होता, शायद मैं वहां से भी बाउंस बैक कर जाती, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं होता. पर जो मैं लेके आई उस एक स्टेप के बाद, वो मेरे लिए लाइफ लर्निंग है. और मेरे बच्चे और my kids are extremely proud of me. Extremely proud of me. Wonderful to hear that. Yeah, Sheetal, I know you're a travel enthusiast and you've already traveled so many countries and places. Yeah. एक बात बताओ, is there anything still pending in your bucket list of places or countries to be visited? I have done all the continents of the world, Samir. There you go. So yeah, again it's a hunger. So when I was growing up, I grew up in normal government quarters. My dad was a government employee, so we never had to travel. I have never traveled. Never traveled. So the first flight which I boarded was with my husband to Dubai. So never had those kind of a luxury. It just like I enjoy traveling. मुझे traveling अच्छी लगती है. I do a lot of travel photography as well. So bucket list में इंडिया घूमना रहता है, क्योंकि इंडिया नहीं घूमा है. And that's something I plan to do that. बहुत कुछ है इंडिया में, बहुत दुनिया घूम चुकी हूँ, लेकिन I have traveled a lot of hill stations. But when I traveled Kashmir,
I can say that with guarantee. There is no place more beautiful than our own India's Kashmir. Is it? It is, and you have got very beautiful hospitality there. I enjoyed my time, and I will again go back. मैंने डल लेक करनी है. मैंने उसमें हाउस बोट का एक्सपीरियंस नहीं लिया था क्योंकि मैं सिर्फ न्यू ईयर का पार्टी करने के लिए गई थी. तो I just stayed in some resort there. But जो आपको रॉयल ट्रीटमेंट इंडिया में मिलता है, आपके अपने लोग मिलते हैं. क्योंकि मैं पिछले 21 साल से बाहर हूँ, तो मैं इस चीज़ को फील कर चुकी हूँ. अभी मैं यूरोप से आई हूँ. जब मैं यूरोप से ऑलमोस्ट 2 हफ्ते की छुट्टी बना के एयरपोर्ट पे थी, तो मैंने अपने हाउस हेल्प को बोला दाल चावल बनाना. क्योंकि वो आप मिस करते हैं. सो आई थिंक इट्स अबाउट, जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया था, आई ऑलवेज मेक अ बजट फॉर द ट्रैवल. सो नथिंग वेयर आई एम पुलिंग आउट सेविंग्स. सो हर इंसान की अपनी अलग फाइनेंसिंग होती है, तो मेरा हमेशा ट्रैवल बजट होता है फॉर द ईयर. आई बाइफिकेट. एंड एक चीज मैंने अपने हस्बैंड को बोली थी, आई वांट टू क्लिक इन front of the places when I'm still young, I'm still looking decent, not when I have grey hairs and I'm having difficulties in walking. So वो आपने कहीं पढ़ा होगा, जो बोलते हैं ना कि एक एज होती है जब आपके पास टाइम होता है, पैसा नहीं होता है, एंड आप उसके लिए काम कर रहे होते हैं, हेल्थ होती है. That's when your youth is. And then by the time when you're old, आपके पास पैसा है पर हेल्थ नहीं है और टाइम है. So I wanted to strike a balance wherein I can still walk, I can do the hiking, and I must tell everybody, tomorrow is unknown, uncertain. What you have is today. So please travel, make your memories. आपके जो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको क्लिक कीजिए, मेमोरीज बनाइए. मेरे बच्चे अब बड़े होते जा रहे हैं, तो वो जब मैं पुरानी पिक्चर्स विजिट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. So there is nothing which I will trade off. I mean that experience, that amount of, the travels which I have done with them, amazing. So no matter what age group they are, you should travel. Travel makes memories. It brings the family together. It's a quality time which you spend. But please switch off your phone. So spend time with the family. You already answered a bit of my next question. I was saying traveling often involves stepping out of your comfort zone. Yes. Yeah. So how has traveling shaped your personal growth and perspective on life? See, I think I in fact wrote a write up on that. So the more I travel, the more I meet people, my view towards the life changes. आप जब जितने लोगों से मिलते हैं, it's about the horizon. आप एक छोटे कुकून में रहते हैं, अपनी दुनिया नहीं देखी होती. जितना आप दुनिया घूमते हैं, मैं बहुत घूमी और उसके बाद शायद मैं अब इंडिया को ज्यादा वैल्यू करती हूँ. सो यहाँ पे जो लोग बैठते हैं, वो दे सी द ग्रीन साइड ऑफ द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, वेयर आई सी लॉट ऑफ ग्रीन्स एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव्स इन इंडिया. Traveling, yes, it comes with some amount of efforts when you travel with the young kids. So when you see smiling pictures, there are a lot of tissue boxes behind because you do cry, you get troubled, you don't get food sometimes. My family is vegetarian. But all said and done, I think वो experience जो होता है, वो आपको आपकी country से rooted करता है, आपको दुनिया दिखाता है कि लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं और दुनिया कैसी है. सो आपका जो व्यू पॉइंट होता है ज़्यादा ग्लोबल, ज़्यादा ब्रॉडर हो जाता है. सो आई थिंक दैट्स समथिंग विच मेक मी नाउ वैल्यू माई ओन स्टफ, माई ओन कल्चर, माई ओन रूट्स, and that makes me a person who I am. So wonderful to hear that. We know that some people travel to seek adventure. Some others do it for relaxation. What type of a traveler do you consider yourself, and what activities do you enjoy most during your trips? You're right, and I don't recollect me putting my legs up and resting or relaxing. So even if I go to Maldives, I will not be resting and relaxing. I'll be doing water sports. I'm more of an adventurous person, so I do a lot of hiking. I do a lot of scuba diving. I did your skydiving. So I do a lot of sports activities. थोड़ा अभी कम किया है, पर I think आपने देखा होगा जब भी मैं लिखती हूँ parasailing done. This done. So I do a lot of adventure sports. Relaxing कम रहता है मेरा, मुझे घूमना ज़्यादा पसंद है. Again, going back to my first answer, restless हूँ, लगता है टाइम बहुत कम है, बहुत कुछ करना है, तो मुझे लगता है बेड पे बैठ के क्या करना है, बाहर निकलो, लोगों को देखो, साइकिलिंग करो, go on the roads, meet people, so that's something. Again, it's me. Good. So on that note, what advice would you want to give someone who's new to traveling and wants to explore the world, but may have reservations or fears? I think you need to fight your fears. Everything will fall in place. Life doesn't come with a manual, and that's something which I've learned. आप बस आगे चलिए, चीजें fall in place होती हैं. Again, giving you an example of my New Zealand thing.
जब मैं एक होटल में लॉक हो गई थी बिकॉज लेवल 4 लॉकडाउन था, पीपल केम फॉरवर्ड. आई यूज टू गेट होम कुक्ड फूड. पीपल आर नाइस एंड जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम बोलते हैं दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी नहीं है, लोग हमारे जैसे ही हैं. सो आप बाहर निकलिए, घूमिए, लोगों से मिलिए. आई थिंक वो एक लाइफ एक्सपीरियंस होता है. सो वो जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको बहुत मेच्योरिटी देता है. एंड यू नीड टू ट्रस्ट पीपल. सो व्हाट आई एम लुकिंग दीज डेज, पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर. पीपल आर काइंड ऑफ बिकमिंग वेरी कॉम्पिटिटिव. No, I don't think so. आपको इतना करना चाहिए. We all are humans at the end of the day. We have the good things in us. कोई पैदाइशी बुरा नहीं होता है. So trust करके देखिए. So I think coming back to the question, जब आप बोल रहे हैं traveling, if you're a new travel, look at your budget, do your financial plannings, do not do overspend. Always compare the cost, and something which you can get in country, do not buy it from outside. So anything which is made in India, I will never pick up from London. So that's something which I do. And always see आप कहाँ रह रहे हैं. मतलब अगर आप रुकने के लिए हैं तभी आप होटल में स्पेंड कीजिए. अगर नहीं है तो आप मे बी ट्रैवल मोर एंड स्पेंड लेस ऑन द होटल. सो डू थिंग्स वाइजली, डू योर रिसर्च, see the vlogs of the people, pick up the 10-15 places what you want to do. So I do the research quite well because I have the kids traveling. वो मेरा दूसरा itinerary होगा. If it's just me traveling, मेरी itinerary different होगी. If it's just me and my husband, मेरी itinerary different होगी. So customize it. See who is the crowd who is following you or the people who are going along, and basis that you can plan your travels. There you go. So for all the travelers out there, I think इससे बेहतर advice नहीं मिलेगा. एक rapid fire हो जाए शीतल. बिल्कुल. One word or one sentence answers. Okay. ठीक है. What makes you happy? My kids. What's your biggest strength? My kids. Who's your biggest cheerleader? My husband. Wow. Where do you get your inspiration from here? My parents. I think the way I'm sure every parent does that, but the way they have actually, brought us and given us the values, I think they are always being very inspirational to me. What's your philosophy on life? Philosophy of life. I'm not too sure whether I'm qualifying to say that, but I always believe that whether you crawl, whether you walk, whether you limp, keep walking. Resting is a dead man show, and the show must go on. So keep walking. Success will fall in place, things will fall in place, but never rest. So it's just a sine curve which I said. चीजें गिरेंगी, ऊपर आएंगी, but keep walking. Wonderful. So what's that one lesson you never want your children to forget? So I'm in Delhi and I took my kids yesterday to my school and to the old house where I used to live, and I was telling them कि आज आप कहाँ रहते हैं, आप किस तरह के स्कूल में जाते हैं, ये आपके पेरेंट्स की एक जर्नी है. So आप उस चीज़ को वैल्यू कीजिए, because what I'm learning is मेरे बच्चे चीज़ों को लेके ग्रेटफुल नहीं है. और ग्रेटफुल इज द वर्ड आपको शायद अपने बच्चों में इंजेक्ट करना पड़ेगा. उनको वैल्यू करनी पड़ेगी हर चीज को. मैं अभी भी बोलती हूँ द मिडिल क्लास ऑफ मी कैन नेवर गो अवे. मैं अभी भी हर चीज का प्राइस चेक करती हूँ. अगर मैं टमाटर को काटती हूँ तो एक क्यूब बचता है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ. मेरे बच्चे उन चीजों को वैल्यू नहीं करते. सो वैल्यू करना इज समथिंग आई थिंक आई वॉन्ट माई किड्स टू वैल्यू इट, and that's something is lacking and I'm working on that. Gratitude is the key. Absolutely. Well done, Sheetal. So before we let you go, what's that one piece of advice you'd want to give to the younger generation or people starting off their careers, let's say? Pick up a career which actually gives you a kick, because we are given 24 hours a day in which 7 to 8 hours we spend in sleeping. So आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वो आपकी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट होते हैं. आपकी फैमिली से ज़्यादा आप अपने ऑफिस में टाइम स्पेंड करते हैं. अगर वो स्पेस सही नहीं है, टॉक्सिक है, या प्रोफेशन वैसा है जिसमें आपको लगता है कि यू आर ड्रैगिंग योर सेल्फ एवरी डे, यू आर स्लॉगिंग, इट वोंट गिव यू एनी काइंड ऑफ अ किक. Possibly one of the things which Samir says, I'm very always, my entry levels are quite high because I'm completely passionate about the job which I do and the kind of a clothes which I get. मैंने प्रोफेशन जब चूज किया, मैं ये पॉसिबली एक्सीडेंटली आ गई थी, पर मुझे मजा आने लग गया इसमें. सो चूज समथिंग विच इज गोना बी विद यू फॉर लाइफ लॉन्ग, और एंड देयर आर नो राइट्स, देयर आर नो रॉन्ग्स. यू कैन ऑलवेज switch your careers, but pick up something which drives you, because if your job is your passion, there is never a dull day. So I think that's something which I will tell it to everybody. There is nothing wrong and right. आजकल लोग YouTube पे भी पैसा कमाते हैं और अच्छा कमाते हैं. वो कीजिए जिससे आपको खुशी होती है, पैसा साथ में आ जाएगा. Never chase money. Choose your passion, drive towards it,
and make it a success. Everything will fall in place if you are actually pursuing it with full of passion, compassion, and honesty. So all will be good. Wonderfully said. And thank you, Sheetal, for your time today. शीतल जी से बात करके आज बहुत मजा आया और उनकी लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को भी मिला. कुछ 2-3 लर्निंग्स शेयर करिए जो आज आपने सीखी. और अगर आप भी इन सक्सेस हैबिट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं एंड यू फील दैट यू नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट, then do reach out to me at my numbers mentioned below and let me personally coach you and train you for success in any area of your life through a very simple but very effective, scientifically tested 10-week program. Please subscribe to my channel if you haven't done so yet. Like the video if you enjoyed the conversation, and also share it with your friends and family so they too can learn and get inspired. Please take good care of yourself and keep smiling till I bring you another inspiring story. Namaste and Jai Hind.